मेरे पिछे इवेंट हो रहा आ BHPA ब्रैम्पटन के अंदर रेजिडेंट ਜਿਹੜੇ लैंडलॉर्ड्स है उन्होंने नवी एसोसीएशन क्रिएट की गई है ब्रैम्पटन हाउसिंग प्रोवाइडर्स एसोसीएशन BHPA। इन्होंने बाकी ਜਿਹੜੇ लैंडलॉर्ड्स की एसोसीएशनस है जिदा सोलो हो गई जिदा दुर्रम लैंडलॉर्ड्स एसोसीएशन और ओपन हाउस ओपन रूम यह सारे ने मिल के अज इवेंट किया लोगों ने बुलाया लैंडलॉर्ड्स ने बुलाया। इन्हों का कहना है कि लैंडलॉर्ड्स के जोड़े हक है पूरे नहीं है ओंटारियो के अंदर। आ जी एसोसीएशनस है सारिया मिल के इन्होंने आ इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिथे लैंडलॉर्ड्स भी आए हैं अपनी अपनी सजेशंस दे रहे हैं। सो वी विल सी होल ऑफ द रिपोर्ट बिकॉज द लैंडलॉर्ड्स एसोसीएशन सोलो BHPA ब्रैम्पटन हाउसिंग प्रोवाइडर्स एसोसीएशन ओपन रूम they all came together to resolve the issues of the landlords because they feel that landlords are suffering and they don't have proper and enough rights. So they are fighting for their rights and also they are demanding that in city of Brampton the RRL licensing program must be stopped because it has no value. So we'll try to talk to the city officials also, councillors also, what they want to say on these kind of gatherings where residents, where the landlords associations are demanding a proper structure so that landlords concerns can be heard. Yes, hi, I'm Kevin Costain from Solo, Ontario, Small Ownership Landlords of Ontario. I'm here at the Brampton Housing Provider Association. We're here in support of their work, their hard work in terms of fighting the RRL locally, and we at Solo support municipal level campaigns very closely. So I'm also here showing off my book and explaining my experiences with my own tenant who burned my house down. My book here is From Rent to Ruin, and it just chronicles the whole process of trying to fight for an eviction and then ultimately having my tenant terrorize me and then burn my house down completely, and ultimately the final rebuild from the studs. So that's what I'm here to talk about, and we're here in great support of the BHPA, and we've been invited, graciously we've been invited to talk for a short time. Right, you can find the book on Amazon, amazon.ca. You search for From Rent to Ruin on amazon.ca. You'll find the book also on our website solo.ca, and you can buy the book there. And generally you can find the book online on Kindle too. It's available as an ebook. The book, as you might imagine, had to go through a legal process, and part of that legal process was ensuring that I wasn't being libelous against the tenant. So I couldn't show the tenant's face completely. I had to cover up the tenant's face, and I really thought this was an interesting picture because this was his Facebook profile picture, completely sideways too, which I thought, having it 4 times like that and sideways seemed really interesting. And so I reversed it in the negative, and it just felt like one of those sort of like true crime documentary type photos. And so I kind of did that, and I covered up his eyes, and so it really doesn't identify him too completely. And so it passed the legal process, and that's really why you see that bar. Okay, BHPA is a Brampton Housing Provider Associations, which we have created or bringing the small landlord community in Brampton to be bringing it together. This is not the associations which we are building. This will be a community that we are creating for the small landlords to provide the housing that is affordable and also provide a safer neighborhood and the safer housing. So this is organization. In this organization we are serving the people, landlords, as well as we are helping the tenants as well. So the main motive behind us, this BHPA, is to bring all the small landlords and to make them a solid voice. At the city level, there are the tremendous amount of the issues that need to be worked on when we talk about the housing that is affordable and the safe housing. So these issues has to be addressed. Recently introduced rental licensing program by the city council, which is a short-sighted, that is creating a biggest problem for the providing the affordable housing within the city of Brampton. And they are saying that we are creating a safer, the RRL will be creating the safer. No, this particular program is going to be put bad and the
good actors into the same bucket, and we are not addressing the actual problem. So under the BHPA, we will be fighting against the issues that the city within the city small landlords are facing, so that we can provide the safer housing. And also, because now we have resurfaced the another issue is the tenant registry, so that because in the other cities the tenants can be registered with the city if they are renting into the city. Now if the city really want to make the safer housing and that they are really concerned about the safety of the tenants, why do not the tenant has to be registered with the city as well? So that is the advocacy we're going to be doing it. Also then the main point at the city level which we are going to be cover is the transfer of the water bill on the tenant name. In the region of Peel, that is not allowed, which is unfair. In the other cities, water bill can be easily transferred on the tenant's name if in the lease the tenant is the person who will be paying for the utilities. So this particular the point has to be also worked on the city level. So tenant registry is the another demand which we are looking for. That similarly in the Alberta province, there is a provision where most of the cities they maintaining the tenant registries. So where if before you renting your unit to the any tenant, you send a verifications to the city, and city give you the green signal whether the tenant that house should be rented out to the given tenant or not. So for the similar kind of the thing, because when we are going through the residential rental licensing program, along with that the tenant also has to be registered, so that before we renting out the unit, at least the city will know that who is the tenant, where they are living. If there is a overcrowding issues, city will be aware in the very beginning, right? If without city knowledge, if somebody is sneaking in, so that's not the landlord's fault, that is the tenant fault. So that will be the city. If really the city want to be work in genuine intentions to overcome the overcrowding, and where they are talking about the incident of the 25 of the basement in a single basement, that issue will not reoccur if that kind of the registry will be in the place. Yeah, for sure, because the main motive is that this community will be stand with all the landlords. Even there is a tenant, if they have an issue, we are not saying that we are only going to be helping to the landlords only, because the tenants can also approach us, because from the landlords we're going to be giving them we will give the initial guidance, and after that, because if there is a legal matter, and that legal matters will be addressed to the lawyers and the paralegals who will be giving them the legal advice. However, because we will be having the contact of the right lawyers and the person who with the skill set, so we will refer to these people so they can be able to go and reach out to take the legal advices. We will be creating networking opportunities, because all these people can come, and if there is any landlord is facing any issue, we encourage that they should speak out. Come to us, we will help them out, and we will be guide them into a certain direction sometime, because they can think of that this is the easiest way. Sometimes the easiest way is not happening in that way, because in that cases, because we can have the experts who are the expertise into the specific area, they can guide them into the right direction, and definitely we will be stand with them. They should not be face the problem alone. We're gonna be stand with them in case if we have to be go and to show up with that, and wherever they need these landlords or the tenant our help, we will be always there. Oh, my name is Chris Seepy. I'm the past president of the Landlords Association of Durham. I am a small property owner-operator for about 15-20 years, give or take. And I was asked by Ravi to attend this inaugural meeting, I believe because I was the author of the petition that went viral. We got about 40,000 signatures in less than a month related to LTD failures to return properties when when their breach of contract has occurred with between tenants and
been a landlord. Landlords are suffering in Ontario for a variety of reasons. You can break that up into symptoms and causes. When you talk about not having the rights, I believe that's that's one of the causes. But the symptoms manifest itself in the way of licensing, in the property taxes and all the other the vacancy tax and corporate taxes and so on. We're just being hammered to death. Landlords obviously feel that there's an imbalance with the Landlord and Tenant Board, but tenants feel the same way as well, that there's an imbalance. So essentially the province is failing both sides in administering justice for housing provider issues. Hello, my name is Weiting Bolu, and I am the co-founder and CEO of Openroom. Openroom started because I wanted to move back into my own property, so I had issued my tenants an N12, which is move out for personal use purposes. But my tenants had told me I'm not moving out and now I'm not going to pay rent anymore. That ordeal went on for about 2 years as I was waiting for my case at the Landlord Tenant Board, which is also known as the LTB. I came out with about 7 court orders or LTB decisions, and I had held them in my hand and I said, what are we going to do with these? Because people need to know about the situation that I had gone through. So these are public documents and people could request them from the courts. So my partner and I decided to build Openroom because we wanted to make this public for everybody. And that's how Openroom got started. Tenants and landlords go on to Openroom and they make a search by name or by address, and you can then look at any results that come up thereof afterwards, such as if there were any non-payment of rent issues or damages, or a landlord might not be maintaining the house because their tenants had taken them to court for maintenance issues. These are the ways that you can vet your tenants or make more informed decisions in general about who you rent to and who you rent from. For me, I had gone through 2 years and that was about $35,000 in just non-payment of rent, and then thousands more dollars in the legal costs, the filing fees, and then mental distress doesn't even cover it. That's priceless. I don't think that the solution to the housing crisis is based on one person, but I do think that it starts with potentially where the government makes the laws and the decisions. But if people have ideas on how to make the housing crisis less of a housing crisis, they should get involved. To stop complaining. Like, if you have a solution, you should get involved and do more in the ecosystem. From Openroom, you would go to www.openroom.ca and you will make your searches directly on the platform, super easy to use. What we're trying to build is towards a future of transparency and connectedness in the rental ecosystem. सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद दूँ कि भी आपने टाइम निकाल के इस इवेंट को कवर किया। आज जो यहाँ पे गैदरिंग है, ये एक बर्थ को सेलिब्रेशन करने के लिए। आज जो है ना, हम बर्थ सेलिब्रेशन कर रहे हैं ब्रैम्पटन हाउसिंग प्रोवाइडर एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है जो लैंडलॉर्ड जो हैं उनको एक हेल्प करने के लिए जितना बेस्ट पॉसिबल वे में हो सकता है हम लोगों की इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन वो हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, ये आने वाले टाइम में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आज जो है इस बच्चे का जन्म हुआ है। ये बच्चा कैसे कैसे बड़ा होगा, ये बच्चा कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे कैसे समाज की ये जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर सकता है, कैसे कैसे हम लीगल टीम को इसके साथ जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे रिसोर्सेज हम जो अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिले और लोगों को एक मोरल सपोर्ट भी मिले। कई बार क्या होता है कि भी मान लो मेरे को पास्ट में भी कॉल आई थी कि भी यार मेरा लैंडलॉर्ड टेनेंट हो खाली नहीं करता, मैं अकेला जाने से वहाँ डरता हूँ। तो मैंने उस टाइम पे भी जो मेरा फ्रेंड था उसको बोला था भाई कि आई एम विद यू, तो मैं उसके साथ गया था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे लोगों की हेल्प कर सकती है, कैसे जो एंटी लैंडलॉर्ड जो रूल्स हैं उनको हम कैसे अबोलिश करवा सकते हैं, और कैसे इस जो ओंटारियो का जो कानून है उनको हम कैसे चेंज करवा सकते हैं ताकि एक जो माहौल हो, जो लैंडलॉर्ड सपोर्टिव हो, नॉट ओनली टेनेंट सपोर्टिव हो। वी आर नॉट अगेंस्ट द बैड टेनेंट, लेकिन हम ये चाहते हैं भी लैंडलॉर्ड का जो हक है उसको सेफ एनवायरनमेंट देना, लेकिन उसी टाइम पे एक लैंडलॉर्ड का हक है एक टाइम पे रेंट करना और उसका घर प्रॉपर मेंटेन्ड हो, उसका प्रॉपर क्लीन्ड हो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे जो पॉइंट होंगे आने वाले टाइम में ये हेल्प कर सकता है। और जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो
इस साइट पे जाके कीप ऑन चेकिंग, और आप इस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ते रहिए ताकि ये बच्चा एक बहुत अच्छा इसका नाम हो और ये एक बहुत अच्छा हेल्प कर सके अपनी कम्युनिटी की। देखिए आरआरएल के बारे में नितिन जी, आरआरएल एक नया इशू नहीं है, ब्रैम्पटन को पता है कि भी ये आरआरएल क्या है। देखिए अपोज इसलिए BHPA ने किया था क्योंकि जब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था आरआरएल का, बिजनेस लाइसेंस इशू करता था, तो 3 वीक के बाद उसको अपोज किया गया। हमने एक पटिशन स्टार्ट की, उस पर मोर देन 8000 सिग्नेचर हुए, तो उन लोगों ने उसको अपोज किया था। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैं एक एक पॉइंट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मेन कंसर्न था सिटी का कंसर्न था भी आरआरएल लागू करने से जो ओवर क्राउडिंग है उसका इशू सोल्व हो जाएगा। आरआरएल लागू करने से जो प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स है, जो पुअर प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड है, उनको मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। उससे वो जो आप कह सकते हो गार्बेज रिमूवल की प्रॉब्लम है इससे सोल्व हो जाएगी। लेकिन जो आरआरएल है वो इन चीज़ों को कोई एड्रेस नहीं करता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बायलॉज हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी बायलॉज हैं तो हम बायलॉज के ऊपर बायलॉज क्यों इन्फोर्स कर रहे हैं? और देखिए रजिस्ट्रेशन किसकी होगी? जो सिर्फ जो कंप्लाइंट है, जिन्होंने अपनी जो लीगल डिवेलिंग्स है वो सिटी के पास रजिस्टर करवाई हुई है, वही जाके इसको रजिस्टर कर सकता है। लेकिन ब्रैम्पटन के अंदर 95% तो ऐसी डिवेलिंग है जो नॉन कन्फर्मिंग है। मैं उनको इलीगल नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उनको बोलूँगा कि नॉन कंप्लाइंट है। तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे जो नॉन कंप्लाइंट यूनिट है उनको कैसे कंप्लाइंट किया जाए, न कि जो ऑलरेडी कंप्लाइंट यूनिट है उसके ऊपर आप बायलॉ एनफोर्स करके उसको करना चाह रही है। देखिए जो आरआरएल है बेसिकली सिटी का लॉन्ग टर्म में ये लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं है, ये लोगों की जेब से पैसा निकलवाने का तरीका है कि भी टिकट उनको ही मिलेगी। इन्होंने फाइन का नंबर बढ़ा दिया। तो देखिए सिटी के पास पावर उनके पास, क्योंकि आरआरएल के थ्रू ये कंसेंट लेते हैं कि हम आके चेक कर सकते हैं आपकी, लेकिन चेक तो कभी भी कर सकते हैं। तो ये मनी मेकिंग मशीन जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने बनाई है, क्योंकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन चाहता है कि लोगों की जेब से कैसे पैसा निकाला जाए, चाहे वो स्पीड कैमरा लगा के है, चाहे कुछ भी है। लेकिन स्पीड कैमरा के बाद जहाँ तक मैं कहता हूँ कि स्पीड कैमरा जो स्पीड रुकेगी वो स्पीड ब्रेकर से रुकेगी, कैमरे से नहीं रुकेगी। देखिए जो हमारी एक मीटिंग है पहले एक 9 तारीख को है, हम सोलो के बैनर के नीचे जो क्वींस पार्क पे एक प्रोटेस्ट करेंगे कर 9 जून को। और उसके बाद जो हमारी मेन मीटिंग है जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंदर होनी है, ब्रैम्पटन सिटी हॉल के अंदर हमने एक प्रोटेस्ट प्लान किया है। सिटी हॉल के जो बाहर जो ग्राउंड है उस पर हमने 16 जून को 2 बजे का जो टाइम है उसके वहाँ पे एक प्रोटेस्ट प्लान किया है, स्टॉप आरआरएल के भी, आरआरएल को वापस लो। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। अब टाइम आ गया है कि हमें मिल के काम करना है। ब्रैम्पटन की 7.5 लाख पॉपुलेशन है। और देखिए जो हमारा ये आरआरएल का जो हम स्टॉप आरआरएल करते हैं, ये हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं है, हमारा ये सब लोगों का ज्वाइंट इंटरेस्ट है। देखिए हम बहुत बातें करते हैं, रेडियो पर भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो आप लोग काफ़ी जो है ना हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अपना बताना चाहता हूँ लोगों को, ये इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप 16 जून को 2 बजे सिटी हॉल के ग्राउंड पे पहुँचिए, बल्कि 10 मिनट पहले पहुँचिए। वहाँ हमारा प्रोटेस्ट करने का एक प्लान है, एक प्रोग्राम है। आप इससे जुड़िए ताकि जो हमारे जो सोए हुए जो सुस्त जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो मेयर है, चाहे वो रीजनल काउंसलर है, चाहे वो काउंसलर है, जो हमारे से पीछे से बोलते हैं कि नहीं आरआरएल सही नहीं है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है वो हमारे साथ खड़े नहीं होते, ताकि उनके कानों में एक ऐसी आवाज़ जाए, उनको झटका लगे, एक स्पार्क लगे, उनको एक करंट लगे, ताकि वो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाए और जो सही चीज़ है उसको सिटी में ब्रैम्पटन में लागू करें। थैंक यू। सत्कारयोग दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਰਆਰਐਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਆ। ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ? ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। 1.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰੈਂਟ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਟ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਟ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਵੀ ਭਾਈ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਾਹਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀ $1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸ ਖਾਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਫਲੋਰਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਚਨ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ $1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ RRL ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ BHPA ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ RRL ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ ਸਕੈਮ। ਕੀ ਹੈਗਾ RRL ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਔਰ ਲੈਂਡਲॉर्ड, ਮੇਨਲੀ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਸਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ हैं। ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਕੈਨ ਦੋਜ਼ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਐਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨ ਇਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਏ, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਏ, ਟੈਨੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਏ ਤੇ LTV ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਟੈਨੈਂਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। LTV ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਹੋਏ, ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਪਰਪਸ। ਜਦਕਿ RRL ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ LTV ਦੇ ਡਿਲੇ, ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 20 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 50% ਜਾਂ 60% ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ RRL ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ।